Good morning. Welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. Symmetry. Animals can be categorized on the basis of their symmetry. So this is also one of the basis of classification, symmetry. So first of all, what is symmetry here? Symmetry का definition properly नहीं दे दिया. Symmetry का definition बोले तो this is कैसे define कर सकते symmetry को हम इधर? तो if we are going to cut the organism and observe that in this organism, this is the central axis. Okay, on the central axis, if we are based on the central axis, observe that here equal number, equal size ये central axis है. बाद में इधर आपको समझ में आने के लिए मैं ऐसा ड्रा कर रहा है, डिफरेंट कलर्स वैसा यूज करके. This is central axis. Through the central axis, if you cut the organism in any direction, okay, so this is plane of division angle बोलते हैं. ऐसा कट करने तो two halves will be going to formed. These halves को बोलते antimeres. Antimeres बोलते. So antimeres are the half of the body parts when we are going to cut this in one angle. These are two parts आ गया. ओके, ये एंटीमियर, ये एंटीमियर. सो अभी दोनों एंटीमियर्स को ऑब्जर्व किया तो इधर ये आधा आ गया, इधर ये आधा आ गया, इधर ये आधा आ गया, इधर ये आधा आ गया. सो देन दे आर गोइंग टू फॉर्म्स द इक्वल हाफ्स, इक्वल मिरर इमेजेस जैसा फॉर्म करते बेटा. वैसे इक्वल हाफ्स आ गया तो वो अरेंजमेंट को बोलते, वो अरेंजमेंट के बोलते. सो दिस इज नोन एज सिमेट्री बोलते, सिमेट्री बोलते इसको. ओके, सो नाउ हम ये एंगल में कट किया, ये एंगल में कट किया. सो ये एंगल में कट करने तो भी ये दोनों हाफ्स फॉर्म हो जाए. ओके, नाउ ये एंगल में कट किया, सो ये दोनों हाफ्स, नहीं तो ये एंगल में कट किया, ये दोनों हाफ्स फॉर्म होते. सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज सिमेट्री बोलते. सो ये हमारा लैंग्वेज में, लेकिन बुक्स में डेफिनेशन कैसे बोले तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बेस्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्री बोलते. ये ज्योमेट्रिकल बोले तो क्या है? ज्योमेट्री बोले तो ये मैथ्स का ज्योमेट्री नहीं है. डोंट वरी दैट, वो मैथ्स को छोड़ के फिर भी इधर आ गए बोले तो फिर भी ज्योमेट्री आ गया, वो ऐसा नहीं है. जस्ट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बोले तो बेस्ड ऑन द सेंट्रल एक्सिस द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स कैसे बोले तो इक्वल इन नंबर. इधर देखो, ये दोनों ओवल शेप 2 है, ये इरेगुलर शेप 2 है, ये सो स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार. सो ये नंबर इक्वल इन नंबर, इक्वल इन डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज अरेंजमेंट, ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट. ऐसा अरेंजमेंट है तो हम ऑर्गेनिज्म को कट करने तो इट विल बी forms the two mirror images, halves exactly. So those are called as antimeres. Okay, now we are going to see that types of symmetries. Symmetry divided as first one asymmetrical, next one radial symmetrical, radial symmetrical, and last one is bilateral, bilateral symmetrical. ऐसा 3 टाइप्स है. सो asymmetrical बोले तो ये means is a Latin letter which means absence. Absent or absence बोले तो इधर कोई ऑर्गन बेस्ड ऑन इट्स सेंट्रल एक्सिस नॉट इक्वल इन डिस्टेंस, नॉट इक्वल इन नंबर, नॉट इक्वल इन साइज, नो इक्वी डिस्टेंस, नो इक्वी नंबर, नो इक्वी साइज. ओके, सो देन दे आर गोइंग टू नॉट फॉर्म्स द मिरर इमेजेस इन एनी डायरेक्शन. सो दिस इज एसिमेट्रिकल हो जाएगा. नेक्स्ट रेडियल सिमेट्रिकल, नेक्स्ट बायलैटरल सिमेट्रिकल. लेट अस सी दैट मे बी नेक्स्ट स्लाइड में. ओके, ये टाइप्स दे दिए इधर.
So just udhar flow chart only. Now either types are we are going to in detail discuss that. Now first variety asymmetrical it is. ये बोले तो absent. Which is absent? Symmetry is absent. Means arrangement of internal organs based on central axis is not properly organized. इसके वजह से उसको कट करने तो कौन सा एंगल में भी कट करने तो it doesn't forms the any mirror images. इसलिए इधर clearly mention किया what they mention here it is. So this is any plane में any plane of division में they does not forms the which one mirror images or equal halves or mirror images or antimirrors को form नहीं करते, antimirrors को form नहीं करते. So ये देखो कैसे इसको स्पॉन्ज है, इसको हम कैसे कट करने तो इक्वल पार्ट्स फॉर्म होते इधर, ये कट करने तो इक्वल फॉर्म्स फॉर्म होते क्या? एग्जैक्टली नहीं होते. ओके सो इधर भी नेक्स्ट ये डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन में भी कट करो वो इक्वल इमेजेस को फॉर्म नहीं करते. ओके ऐसा बोल के ऑल स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल बोले तो मोस्टली एसिमेट्रिकल, वेरी फ्यू आर रेडियल सिमेट्रिकल. वो फोरिफेरा कैरेक्टर्स में हम डिस्कस कर लेंगे. इधर है तो ये स्पॉन्जेस मोस्ट इरेगुलर. बाद में वेल नोन ऑर्गेनिज्म इट इज. सो दिस इज सेंट्रल एक्सिस को लेने तो इधर कट करने तो दो इमेजेस फॉर्म होते क्या? नहीं. इधर भी ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं. कौन सा एंगल में भी कट करने तो इट डजंट फॉर्म्स द मिरर इमेजेस. इवन दो आवर पाम को भी हम मिरर इमेजेस जैसा कट नहीं कर सकते. ओके सो दिस इज एसिमेट्रिकल. ओके नेक्स्ट वन इज यस सेकंड वैरायटी रेडियल सिमेट्री बोलते, रेडियल सिमेट्री. सो ये रेडियल सिमेट्री क्या है? सो रेडियल सिमेट्री में ऑर्गेनिजम्स आर ऐसा होते राउंड और कौन सा सिलेंडर लाइक, पिलर लाइक, कॉलम लाइक ऑर्गेनिजम्स होते. इसको वो अरेंजमेंट के वजह से एग्जैक्टली सेंट्रल एक्सिस से इधर देखो क्लियरली हमको पता चलेगा सेंट्रल एक्सिस से इक्वल डिस्टेंस एवरीथिंग विल बी. ओके सो दे आर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड इंटरनल ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स एवरीथिंग. सो ये अरेंजमेंट के वजह से उसको हम एनी प्लेन से भी हम two equal halves or identical halves or mirror images or antimirrors को form कर सकते. That is called as a which one? Radial symmetry. Previously asymmetrical में कोई भी एंगल में कट करो मिरर इमेजेस कभी भी नहीं फॉर्म करते. दैट इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिकल. अभी कोई भी एंगल में कट करो मिरर इमेजेस फॉर्म करते क्योंकि उसका अरेंजमेंट वैसा होते. सो दिस इज कॉल्ड एज विच वन? रेडियल सिमेट्रिकल. एंड इधर एग्जांपल्स बोले तो सिलेंटरेटा एंड टीनोफोरेंस, सिलेंट्रेट्स, हाइड्रा देखा ना. सो दैट इज स्टारफिश, इसको देखने. नेक्स्ट वन इज सैंड डॉलर्स, इकोनोडर्म्स, कोरल से ये नाइडेरियंस होते, कोरल पॉलिप्स. देन इधर प्लांट्स में भी देखने तो ये नींबू है, सिट्रस फ्रूट्स. इसको कौन सा एंगल में भी हम कट करने तो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अम्ब्रेला होते ना, नहीं तो क्रिकेट बॉल होते ना, उसको कौन सा एंगल में भी हम कट करने तो मिरर इमेजेस फॉर्म कर सकते. देन दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स. ओके सो ये रेडियल सिमेट्री में भी फर्दरली हम ऑब्जर्व किया तो बुक्स में तो एनसीईआरटी में भी क्लियरली पता नहीं है तो क्लियरली मेंशन नहीं किया. तो दैट इज रेडियल सिमेट्री is two types, that is biradial symmetry and pentamerous radial symmetry. biradial symmetry इधर लेते हैं हम. biradial, bi बोले तो क्या है बेटा? हमको पता है ना. bi बोले तो bi means two. So biradial symmetry बोले तो इधर two indicate क्या है बोले तो when we are going to cut the organisms in this two angles only, it will be forms the mirror images. दो mirror images यानी equal halves को हम दो एंगल में ही फॉर्म कर सकते, दो एंगल में ही कट करने तो it will be going to forms as a mirror images. इसलिए by बोले तो two, वो टू क्या है? यही एंगल्स पे. रिमेनिंग डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइंस में हम मिरर इमेजेस को फॉर्म नहीं कर सकते. देन इट इज कॉल्ड एज अ बाई रेडियल सिमेट्री. बाई इंडिकेट्स दैट हियर प्लेन ऑफ डिवीजन और एंगल ऑफ डिवीजन. ओके नेक्स्ट पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. इधर एग्जांपल बोले तो ये सी एनिमन बोलते बेटा, सी एनिमन मेट्रीडियम बोलते. सो दिस इज शोस दिस वन. नेक्स्ट अनदर वन पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री. इधर बाई बोले तो टू बोला, नाउ पेंटा बोले तो कौन सा बेटा?
पेंटा, पेंटा मीन्स यस वेरी गुड, पेंटा बोले तो कौन सा 5, 5 इट इज। सो ये 5 क्या इंडिकेट करते हैं, प्रीवियसली 2 प्लेन ऑफ डिवीजन एंगल्स, इधर 5 प्लेन्स ऑफ डिवीजन एंगल्स में, सो ये एक है, इधर एक, तो इसको हम फिर भी काउंट नहीं करना है, एक बोले तो एक ही है। नेक्स्ट वन 2, 2, नेक्स्ट वन 3, 3, नेक्स्ट वन 4, 4, एंड नेक्स्ट वन इज 5, ये 5। ये 5 प्लेन्स ऑफ डिवीजन में ही हम इक्वल मिरर इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। अदर दैन दैट वी मे नॉट एबल टू फॉर्म द मिरर इमेजेस और एंटीमियर्स और इक्वल हाफ्स, देन दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पेंटामिरस। प्रीवियसली बाइरेडियल, बाई मीन्स 2 एंगल्स ओनली, इधर पेंटामिरस 5 एंगल्स में मिरर इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट इज दिस वन, वेल नोन है ना, दैट इज 5 आर्म्ड स्टारफिश, ये स्टारफिश है। Okay, even operoidians also, serpentine stars, ये sea stars है, serpentine stars also shows this symmetry, pentamerous radial symmetry। वैसा 5 arms है, वो equally ये symmetry को form कर सकते। Okay, so this is a radial symmetry में 2 types of symmetries, generally NCERT में mention नहीं किया। radial symmetry में 2 categories है, one is कौन सा bi radial symmetry and another one is पेंटा रेडियल सिमेट्री। बाइरेडियल सिमेट्री में सो प्लेन्स ऑफ डिवीजन हाउ मेनी होते बेटा 2, पेंटामिरस में 5। ओके, सो दिस इज 5, ये 2, सो दिस इज पेंटामिरस रेडियल सिमेट्री, बाइरेडियल सिमेट्री, टोटल रेडियल सिमेट्री कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन, हाईली एडवांस्ड सिमेट्री, highly developed organisms में, even including human beings also, this symmetry we can observe it, that is none other than that bilateral symmetry। be careful here, again bi आ गया, इसका meaning भी 2 है। okay, previously bi radial symmetry, इधर bilateral symmetry। biradial symmetry में bi indicates that which one 2 प्लेन्स ऑफ डिवीजन एंगल्स को, इधर बाइलैटरल सिमेट्री, बाइलैटरल सिमेट्री बोले तो क्या है, हम इधर ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते ओनली इन वन एंगल, थ्रू दिस वन एंगल ओनली इट विल बी फॉर्म्स द मिरर इमेजेस इक्वल हाफ्स, दैट इज व्हिच वन राइट एंड लेफ्ट, ये राइट एंड दिस इज लेफ्ट। ओके, इधर भी वैसे, सो दिस इज प्लेन ऑफ डिवीजन राइट एंड लेफ्ट, हियर आल्सो सेम थिंग राइट लेफ्ट, हियर आल्सो सेम थिंग राइट एंड लेफ्ट इट इज। सो राइट एंड लेफ्ट कौन सा, राइट एंड लेफ्ट आर दी बोथ साइड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लैटरल्स बोलते हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। एक्चुअली द बेसिक थिंग इज लाइक दिस वन, ऑर्गेनिजम्स को देखने तो at which end more sense organs are concentrated, then that end is called as anterior end, and opposite to this one where tail anus is present, that is called as a posterior end. Back side of the organism is called as at which side notochord or vertebral column is present in a chordates, that is the dorsal side, and uska opposite mouth and abdomen is present, that is called as the ventral side, and remaining right and left laterals anterior, posterior, dorsal, ventral, राइट एंड लेफ्ट लैटरल्स बोलते। सो इधर ऑर्गेनिज्म को एग्जैक्टली थ्रू दिस एंगल कट करने तो 2 मिरर इमेजेस हाउस विल बी दोज 2 कौन सा, एक है तो राइट एक है तो लेफ्ट है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ बाइलैटरल सिमेट्री। हम ऑर्गेनिज्म को एक ही एंगल में कट कर सकते, वो कट करने के बाद एंटीमियर्स फॉर्म होते ना, दोज आर द लैटरल्स, इसलिए इसको बोलते बाइलैटरल सिमेट्री। बट बाइरेडियल सिमेट्री में देखने तो देयर प्लेन ऑफ डिवीजन हाउ मेनी, 2 होते, इधर प्लेन ऑफ डिवीजन हाउ मेनी, एक ही होते। सो उधर कट करने के बाद 2 हाउस फॉर्म होगा, दैट इज नॉट राइट एंड लेफ्ट, इधर है तो राइट एंड लेफ्ट ओनली फॉर्म होगा। सो दिस इज कॉल्ड एज bilateral symmetry. This will be starts from which one platyhelminthes to chordates, like maximum organisms, but we should not say that all, क्योंकि बीच में मोलस्का है, बाद में इचैनोडर्मेटा। अभी देखा हमने इचैनोडर्मेटा में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, अडल्ट्स में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, एंड लार्वल फॉर्म्स में तो बायलैटरल सिमेट्री होगा। ओके, एंड इवन मोलस्कन्स में गैस्ट्रोपोड्स पर्टिकुलरली, दोज आर आल्सो लार्वल स्टेज में बायलैटरल, बट अडल्ट्स में ड्यू टू द प्रोसेस टॉर्सियन बोल के, सो स्पाइरली अरेंज होते हैं ना ऑर्गन्स, देन
स्पाइरल अरेंजमेंट में हम ऑर्गन्स को इक्वली कट नहीं कर सकते, देन अडल्ट्स बिकम्स एसिमेट्रिकल। ऐसा बोलकर सभी मोलस्कन्स एसिमेट्रिकल नहीं है, कुछ ऑर्गेनिजम्स विल बी बायलैटरल सिमेट्रिकल आल्सो, ओके, सम एग्जम्पशंस विल बी, वी कैन रिमेंबर दैट, ओके। सो इधर all these organisms, which one, all triploblastic organisms bilateral symmetry बोले तो statement थोड़ा सा गलत हो जाएगा, okay। So exemptions will be, yes। Now another basis of classification, that is nothing but germinal layers बोलते, germinal layers। So what is this germinal layers? Either germinal means which is giving birth, germ, okay, giving birth। Another germs meaning क्या है? That is nothing but microorganisms which leads to harm। So either germinal layers means from these layers will be going to forms different variety of organs, organ systems different will be, okay। So germinal layers are otherwise known as a primitive germinal layers, क्योंकि ये embryonic development stage में ही होते, बाद में these are going to differentiated into different variety of organs। So after birth we may not observe germinal layers in our body, क्योंकि पूरा germinal layers was going to modified as a different organs and organ systems। So at primitively अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम ये 3 लेयर्स को ऑब्जर्व कर सकते। सो व्हाट आर दोस थिंग्स? तो जर्मिनल लेयर्स, प्रेजेंस ऑफ जर्मिनल लेयर्स, देन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द ऑर्गेनिजम्स एज 2 ग्रुप्स, डिप्लोब्लास्टिक एंड अनदर वन इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। डाई बोले तो क्या है? डाई, बिस, बाई, ये पूरा मीनिंग सेम ही है, सो दैट इज 2, ओके। ट्राई बोले तो कितना है? दैट इज मीनिंग 3, सो इधर 3, इधर 2। So what is this 2 and what is this 3 is here? Diploblastic बोले तो इधर 2 germinal layers are present and उधर 3 germinal layers are present। So इधर ये first, that is outermost ectoderm बोलते, and innermost is called as endoderm। ये ectoderm है, ये endoderm है। So बोले तो ये area, दिस इज एक्टोडर्म एंड दिस इज एंडोडर्म। इन दोनों के बीच में ये रेड कलर का पोर्शन जो है ना, दैट इज मीसोग्लिया, okay, gel like a connective tissue will be present, okay। next इधर भी वैसे, okay, outermost ectoderm एंड इनरमोस्ट एंडोडर्म, इसके बीच में नॉन लिविंग लेयर, ये फ्यूचर में एवोल्यूशन में, सो दिस विल बी गोइंग टू फॉर्म्स लाइक ये नॉन लिविंग लेयर फॉर्म्स एज ए सेलुलर लेयर, ओके, एक लेयर जैसा। सो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में 2 germinal layers are present, outermost one is called as ectoderm, innermost one is called as endoderm। इसके बीच में gel like connective tissue will be there, that is non living, mesoglea बोलते, okay। next here 3 germinal layers are present, those are outer ectoderm and inner endoderm। इस दोनों के बीच में ये ectoderm है, ये एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच में रेड कलर वाला जो है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ मीसोडर्म। मीसो बोले तो नथिंग बट मिडिल बोलते, मिडिल मीनिंग इज अ मिडिल, ओके। नाउ इधर देखने तो क्लियरली पता चलेगा, इधर टिश्यू लेयर्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये आउटर मोस्ट एक्टोडर्म एंड ये इनर मोस्ट एंडोडर्म, ये एक्टोडर्म, आउटर मोस्ट एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, and green color वाला तो कौन सा है? mesoderm। so that is present in between the ectoderm and endoderm। so that's why here 3 germinal layers are present, that's why it is known as a triploblastic, and here 2 germinal layers, this is called as a diploblastic। so इधर हम examples लेने तो cnidarians and next one is टेनोफोरेंस, ये दोनों फाइलम्स बोले तो जेली फिशेस, हाइड्रा, कोम जेलीस, ये पूरा। नेक्स्ट वन इधर ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लाटी हेलमिंथिस ऑनवर्ड्स इट विल बी गोइंग टू स्टार्ट्स एंड अप टू कार्डेटा। सो वी आर आल्सो कौन सा? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ओके। सो दिस इज डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्मिनल लेयर्स होते, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्मिनल लेयर्स होते, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, बीच में मेसोडर्म प्रेजेंट, ओके। सो ये जर्मिनल लेयर्स का पर्पस क्या है बोले तो, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दे आर गोइंग टू फॉर्म, लेटर दे आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इनटू वेराइटी ऑफ ऑर्गन्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स, ओके ना। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स। इधर जर्मिनल लेयर्स मेंशन किया, लेकिन वो कैसे फॉर्म होते हैं ये मैकेनिज्म एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया, हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे ये जर्मिनल लेयर्स कैसे फॉर्म होते, ओके। सो नाउ सी दिस वन, ये इंफॉर्मेशन कुछ रेफरेंस बुक्स में ही हमको मिलेगा, लेकिन फॉर अवर पर्पस वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग दिस, ओके।
So this will be going to start from the which one gametes onwards. ये female gamete, ये male gamete. So ये दोनों undergoes the which one fusing of gametes known as a कौन सा बेटा? Yes, fertilization. फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. सो फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या फॉर्म होगा? यूनिसेल्युलर स्टेज, वन सिंगल सेल फॉर्म होगा, दो सेल्स मिक्स होके एक सेल फॉर्म होगा. दिस इज अ हैप्लॉइड, दिस इज आल्सो हैप्लॉइड. n plus n, that is a 2n. दिस इज कॉल्ड एज अ जाइगोट. जाइगोट फॉर्म हो जाएगा. दिस जाइगोट विल बी फर्दरली डिवाइडेड एज longitudinal first division. Two cells will be going to formed. Next one, another division perpendicular to first division. This is a 4 cell stage. बाद में another division perpendicular to first 2 divisions. Yes, हम एप्पल को लेके फर्स्ट ऑफ ऑल वैसा कट करते, बाद में ऐसा कट करते. ओके, सो नाउ 4 cells in one stair only. उसको फिर भी ऐसा कट करने तो 8 cells 4 plus 4 फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर जैसा. ओके, नहीं तो ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर जैसा 8 cells will be going to formed. Now इसके बाद the cells will be forms 16 cells. That is a ball of cells known as a marula बोलते. So this is a ball of cells. इसमें cavity नहीं होते, पूरा cells ही present होगा. So this is a 8 cell stage and 16 cell stage. marula बोलते इसको, मार्यूला. बाद में मार्यूला के बाद कौन सा? ब्लास्टुला स्टेज. सो 16 सेल स्टेज हो गए ना. नेक्स्ट 32 सेल स्टेज, 32 सेल्स. ये 32 सेल स्टेज में बाद में क्या होगा? स्लोली द सेल्स विल बी गोइंग टू डिसइंटीग्रेट. ब्लास्टुला, ब्लास्टुला बोलते. ओके ना. नेक्स्ट इधर ये सेल्स जो होते हैं ना, ये पूरा सेल्स इज दिस सेल्स आर कॉल्ड एज ब्लास्टोमियर्स. ब्लास्टोमियर्स बोलते बेटा. ओके, नाउ ये स्टेज के बाद सेल्स स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट एंड वन मोर प्रोसेस इज नोन एज invagination of cells will be going to. Cells start to disintegrate and forms cavity filled with. So here which one इधर से gastrula stage बोलते. Okay, now ये invagination process also started. ये invagination का. Now this invagination will be going to proceeds here. नेक्स्ट स्टेज में ये इन्वेजिनेशन कैसे, हम एक रबर बैलून को लेके नीचे से कौन सा थंब से प्रेस किया तो कैसे अंदर जाते हैं ना. सो इधर जो कैविटी फॉर्म हो गया बाय द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील बोलते. ये ब्लास्टोसील विल बी ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ए न्यू कैविटी विच इज गोइंग टू इन्वेजिनेशन की वजह से फॉर्म होते. सो दिस इज फाइनली ये जब तक इन्वेजिनेट होते बोले तो दिस न्यूली फॉर्म्ड लेयर जो है ना, दैट विल बी गोइंग टू टचस द अपर लेयर इधर. सो जो प्रिमिटिव कैविटी है ना ब्लास्टोसिल वो कम हो रहा है. ए न्यू कैविटी विल बी गोइंग टू फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोसील. गैस्ट्रोसील बोलते. दिस गैस्ट्रोसील विल बी गोइंग टू कम्युनिकेटेड आउटसाइड विद द हेल्प ऑफ ब्लास्टोपोर. ब्लास्टोपोर, बी केयरफुल बेटा. हियर ब्लास्टोमियर्स मैं बोला, बाद में ब्लास्टोसील बोला, बाद में ब्लास्टुला स्टेज बोला, बाद में ब्लास्टोफोर बोला. ओके, नाउ इधर से डिफरेंशिएट होते कौन सा? ये दोनों लेयर्स फॉर्मेशन. ओके, सो कैसे देखेंगे? इधर से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा. डिप्लोब्लास्टिक फॉर्मेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्मेशन. सो डिप्लोब्लास्टिक फॉर्मेशन को देखने तो डिप्लोब्लास्टिक ये नेक्स्ट स्टेज में कैसे होते हैं? ये इन्वेजिनेशन कंप्लीट हो जाएगा. ये इन्वेजिनेशन कंप्लीट हो गया. दिस विल बी गोइंग टू टचस द अपर लेयर. ये पूरा. नाउ गैस्ट्रोसील
बढ़ गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होते हैं इधर ये सेल्स लेयर्स जो है ना बेटा इधर, दिस विल बी गोइंग टू फ्यूजेस हियर एंड दिस विल बी गोइंग टू फ्यूजेस हियर। देन बाय दैट नेक्स्ट स्टेज में क्या हो गया, तो दिस विल बी गोइंग टू फॉर्म्स दैट, ये इनरली फ्यूज हो गए ना, देन इनर मोस्ट एक लेयर फॉर्म हो जाएगा एंड आउटर मोस्ट दूसरा लेयर फॉर्म हो जाएगा। सो आउटर मोस्ट वन इज नोन एज विच वन, एक्टोडर्म, एंड इनर वन इज नोन एज अ एंडोडर्म। एंडोडर्म। So how many layers form हो गया इधर, ectoderm, endoderm. So that's why it is called as a diploblastic. Diploblastic बोलते, 2 layers organisms will be. So the organisms which contains the 2 germinal layers, those all are grouped under diploblastic. Diploblastica बोलते वो पूरा ग्रुप को. Now triploblastic. Triploblastic वो 3 germinal layers कैसे फॉर्म होते, let us see those things. So here same thing, थोड़ा सा वेरिएशन होते बेटा, ये एक मिनट, ओके ना। नाउ ये डिप्लोब्लास्टिक जैसा, इधर क्या होगा बोले तो इधर some specialized cells are going to formed by the differentiation of embryonic, ये ब्लास्टोफोर है ना, इनसाइड फोल्डिंग है ना, उधर से ये सेल्स से ही some cells are going to get differentiated and forms like a 4D embryonic cells बोलते इसको, 4D cells। ये 4D सेल्स से फ्यूचर में क्या होगा, मीसोडर्म विल बी गोइंग टू गेट डेवलप, मीसोडर्म। सो नेक्स्ट स्टेज में कैसे होगा बोले तो, सो देखो ये inner one will be going to fuses here and outer layer also going to fuses. This is innermost endoderm and it is outermost कौन सा होता है बेटा, ectoderm, and इन दोनों के बीच में yes this is mesoderm will be going to gradually growing in opposite directions and finally it will be going to fuses and forms like a continuous layer, that is a mesoderm in between the endoderm as well as a ectoderm. So here 3 layers are formed. One is outermost ectoderm, and middle one is a mesoderm and inner one is a endoderm. Endoderms. So derma means a layer it is. Okay, so this is a diploblastic and it is a triploblastic layers formation it is. So once again I am going to explaining this one. ये books में very few reference books में भी आपको available है, okay? इसलिए और एक बार एक concept को मैं explain करूँगा, सुनो। इधर gametes है, ovum and spermatozoa, ये दोनों फ्यूज होते, that process is known as a fertilization. Fertilization की वजह से zygote diploid cell will be going to form and this is undergoes the first mitotic division, 2 cell stage, and second mitotic division 4 cell, third mitotic division that is 8 cell, fourth mitotic division that is 16, fifth mitotic division 32 cell. ये 8 to 16 मार्यूला बोलते and 32 ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट ये गैस्ट्रुला स्टेज बोलते। ये गैस्ट्रुला स्टेज में मार्फोजेनिक मूवमेंट्स मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स और टिश्यूज एज ए लेयर्स होते, ओके? इधर एक प्रोसेस कॉल्ड एज अ इन्वेजिनेशन। व्हाट इज दिस इन्वेजिनेशन बोले तो, इन्वेजिनेशन वर्सेस एवाजिनेशन बोलते। इन्वेजिनेशन बोले तो फोल्डिंग inward, evagination बोले तो folding outward it is. So folding inward, ये inward invagination process, okay? Due to that previously there is no layers and then gradually layer will be going to forms. So इधर जो cavity है इधर is called as a blastocele and ये इससे new cavity जो form होते हैं ना that is called as a gastrocele, primitive gut cavity बोलते। ये पूरा invagination हो गया। ये स्टेज में हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म को ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंशिएट कर सकते। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में ये इनर लेयर इधर ये
फ्यूज होगा, आउटर लेयर ये फ्यूज होगा, देन 2 लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म एंडोडर्म फॉर्म हो जाएगा, 2 जर्मिनल लेयर्स ओनली, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डिप्लोब्लास्टिक। एंड नेक्स्ट स्टेज में इधर इस दोनों का डिफरेंस क्या है बोले तो इधर 4D एम्ब्रियोनिक सेल्स डज नॉट गोइंग टू डिफरेंशिएटेड, इधर 4D एम्ब्रियोनिक सेल्स विल बी गोइंग टू डिफरेंशिएटेड, दैट विल बी गोइंग टू एक्ट लाइक ए मदर लेयर फॉर द म्यूसोडर्म। देन फ्यूचर में ये दोनों layers will be going to grown in opposite direction cells, then they will be fuses and forms the a new layer that is called as a mesoderm. Ecto means outside, endo means inside, meso bole to in between that. Okay, so I hope you understand this one, formation of germinal layers, diploblastic and triploblastic. Okay na? So examples बोले तो diploblastic के लिए नाइडेरिया एंड नेक्स्ट वन टीनोपुरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक से जो फ्लाटी हेलमिन्स आते हैं ना अप टू कार्डेटा, सो मैमल्स तक इट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। ओके,